Hello and good evening to everyone. First of all, do let me know, am I audible to everyone? So that we should start our session. We are getting a bit late. Let me know via chat box. Am I audible to everyone? And presentation is also visible too. Okay. Thank you for the confirmation. First of all, thank you everyone for joining, and let's start this session. And this session will definitely going to be recorded, and I will provide to you after the ending this session. My name is Dr. Dileep Kumar. I'm a physiotherapist, and I'm host of this webinar as well. First of all, thank you so much, Dr. Suresh Kumar, for joining, and we are handing over to him just after 5 minutes. So let's begin this session. And okay, इस सेशन का बेसिक मकसद ये है कि मेरी जो एकेडमी है बेसिकली वो ज्यादातर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको हम गल्फ पाथवेज की ना कि सिर्फ प्रिपरेशन करवाते हैं, बट अदर देन दैट जो डेटा फ्लो सर्विसेज हैं उनमें भी हम उनको बड़ा हेल्प वगैरह करते हैं। लेकिन दिस टाइम वी हैव टारगेटेड टू द एमबीबीएस डॉक्टर्स एज वेल, एंड वन ऑफ द एमबीबीएस डॉक्टर वी हैव डॉक्टर सुरेश कुमार, जो हमें ज्वाइन करेंगे, और एक गेस्ट अपीयरेंस भी है, वो भी हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे। उनका भी हम नाम जो है डिस्क्लोज कर देंगे लेटर। तो इस वेबिनार का मकसद सर ये है, काफी जो है वो मुझसे डॉक्टर सवाल पूछ रहे थे कि क्या सर आप जो है वो जॉब रिक्रूटमेंट के हवाले से डील करते हो। वी डोंट डील विद दी एनी जॉब रिक्रूटमेंट, लेट मी क्लियर वन थिंग, बट वी कैन ओनली हेल्प टू हाउ टू क्लियर द गल्फ पाथवे। जितने भी गल्फ लाइसेंस एग्जामिनेशन हैं, हर स्टेट का, हर कंट्री का लाइसेंस एग्जामिनेशन अलग होता है। तो ये जो वेबिनार है ये प्योरली प्योरली एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए है, जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी आपका हो। तो ये जो वेबिनार रिकॉर्ड होगा, या ये जो वेबिनार शुरू होने जा रहा है, इसमें हम सिर्फ मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, आपका दुबई, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह, उनके हवाले से हम आपको इंटरटेन करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि वहां पर लाइसेंस कैसे लिया जाए, और वहां पर जाके आप जब जॉब वगैरह लेते हो तो उनको उनके जो डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, दुबई का पोर्टल शरियान है, सऊदी का मुमारिस है, ओमान का ओएमएसबी है, कतर का डिफरेंट है, बहरीन का डिफरेंट है, तो वो कैसे प्रोसीड किया जाए और उसमें हम आपको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, और इवन हम क्या चार्ज करेंगे, और हमारी सक्सेस स्टोरीज क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज द ओनली रीजन बियॉन्ड दिस वेबिनार। लेट मी क्लियर वन थिंग, ठीक है? सो आई विल जस्ट टेक 5 minutes एंड देन वी विल हैंड ओवर दिस सेशन टू द our guest speaker. So this is our today's speaker, Dr. Suresh Kumar. Dr. Suresh Kumar जिन्होंने एमबीबीएस जो है वो लम से किया। मजीद डॉक्टर सुरेश आपको मजीद बेहतर बताएंगे। रिसेंटली उनके बारे में मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। रिसेंटली ही क्लियर दी रिटन test and the interview from the Oman Sultanate, and he is also has been appointed as a GP there. मजीद वो आपके बारे में मजीद बताएंगे। उनके पास डीओएच का लाइसेंस भी है, जो कि अबू धाबी का होता है, और ओमान का भी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, आफ्टर दैट दिस इज माई सेल्फ एंड लेट्स कंटिन्यू। मैंने भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डीएचए डीओएच और जो है वो एएचपीसी का लाइसेंस है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा मुख्तसर मेरी सीएमटी एकेडमी के बारे में, कि सीएमटी एकेडमी ना कि सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स, बस जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ हम डील करते हैं, और हमारा मेन पर्पस होता है उनको डेटा फ्लो की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना और लेक्चर्स देना। जितने भी हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, आज का सेशन एमबीबीएस के ऊपर है, लेकिन इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सेस हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या ओटी जितने भी हैं, उनके साथ भी हम मेनली डील करते हैं। आफ्टर दैट ये हमारे पास सर्विसेज है कि आपका गल्फ लाइसेंस है, कोई भी कंट्री आप चूज करते हो अपने हिसाब से, उसकी पूरी कंप्लीटली जो डेटा फ्लो की कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे ये वेबिनार है। लेकिन डेटा फ्लो के जो कंसल्टेंसी के चार्जेस होंगे वो हम आपसे डील करेंगे। व्हाट इज द डेटा फ्लो, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री में जब एज ए कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, एज ए जीपी या एज ए कंसल्टेंट, वो आपकी स्पेशलिटी रैंक पे होता है। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस बैचलर डिग्री आप, तो आप एज ए जीपी के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए डिफरेंट गल्फ कंट्री में डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सऊदी में 1 ईयर है, दुबई वगैरह में 2 इयर्स है, ओमान में डॉक्टर सुरेश बताएंगे हमारे पास 4 साल है। और अगर आपके पास एक पोस्ट एफसीपीएस के बाद 3 साल की जो है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो आप एज ए स्पेशलिस्ट रैंक पे भी जा सकते हो। तो रैंकिंग जो है वो आपकी डिग्री के बेसिस पे होती है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री है, उस पर आप एज ए जीपी जाते हो, लेकिन बाकी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बुनियाद पे आप लोग जा सकते हो। लेट मी क्लियर की काफी ऐसी डिग्रीज होती हैं जैसे एमआरसीपी वगैरह, तो उसमें जो गल्फ के एग्जाम्स है वो भी कुछ जैसे दुबई और सऊदी है उसके स्किप हो जाते हैं, मतलब आपको पेपर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास वो उनकी जो है वो डिग्री है। जैसे एमआरसीपी डिग्री होती है, उसके बाद पोस्ट एमआरसीपी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है चाहिए होता है। तो जो डेटा फ्लो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन की सर्विसेज हैं वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस सेशन उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो एग्जाम्स की तैयारी है, जैसे एमबीबीएस, अगर आप कोई भी गल्फ
एग्जाम कंट्री चूज करते हो और उसके एग्जाम की तैयारी आपने करनी है, जैसे दुबई के एग्जाम का नाम DH है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, DOH अबू धाबी का है, MOH शारजा का है, UAE उसी में आ गया, SCFHS जो है वो सऊदी का है, OMSB जो हम आज बात करेंगे ओमान का है, NHRA जो है वो बहरीन का है, QCHP जो है कतर का है। जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं और वहां पर अगर आप एज ए GP जाना चाहते हो तो उनके जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उनकी भी फैकल्टी हमारे पास है। वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर वी हैव डॉक्टर सुरेश कुमार। और अदर जो उसकी सर्विसेज हैं, डेटा फ्लो से लेके आपके जो लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ हमारी टीम डील कर रही है। सो बेसिकली दिस वेबिनार इज जस्ट गोइंग टू फैसिलिटेट यू एंड गाइड यू कि हाउ टू सीक योर करियर, हाउ टू परसू योर करियर इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट नाउ जो मेरी एकेडमी की सक्सेस स्टोरीज हैं, जिसमें हमारे पास 10 से 12 अभी रिसेंटली जो गल्फ कंट्रीज के MBBS डॉक्टर्स थे जिन्होंने जो है वो हमें कांटेक्ट किया था और हमने उनको जो प्रिपरेशन वगैरह करवाई थी। तो 10 MBBS डॉक्टर्स ने जिन्होंने जो है वो DHA दुबई का एग्जाम क्लियर किया हुआ था, और 2 हमारे पास MBBS डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सऊदी का एग्जाम किया हुआ था। और उसके अलावा अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिसमें फिजियोज हैं वगैरह, उसका भी मैंने सारा यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह लिखा हुआ है। ओके, so this was all, and this is the only simple motto, simple vision from our side for the CMT Academy, that how the healthcare professional, if they wish to pursue, if they wish to build a successful career in the Middle East countries, and we are just going to facilitate them. So let's break it out. हम इसको मुख्तसर करते हैं, short करते हैं, and the next voice would be from the Dr. Suresh Kumar. और thank you so much Dr. Suresh for joining. Dr. Suresh के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो रिसेंटली जो है वो अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू ब्रेक किया है और पेपर भी क्लियर किया है वो ओमान का। मजीद डिटेल्स में वो आपके बारे में बताएंगे एंड हाउ दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट दिस वेबिनार, द मस्ट बी लीडिंग। सो द नेक्स्ट वॉइस वुड बी डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश कुमार, कैन यू हेयर मी? ओके, जस्ट अ सेक। ओके, थैंक यू डॉक्टर सुरेश। नाउ आई एम मेकिंग यू होस्ट एंड द नेक्स्ट वॉइस वुड बी यू, एंड आई एम ओवर ओवर टू यू। थैंक यू। डॉक्टर सुरेश, आपकी वॉइस आई couldn't unmute. Just wait for a second. Just यस डॉक्टर सुरेश, आप ट्राई करें। Yeah, I hope everyone can hear me now. Thank you so much for this great introduction. I hope all of you are doing very good in your life already. And now is the time to know about few things that you don't know. I am Dr. Suresh, as Dr. Dileep has already introduced me. I recently landed a job, thankfully, landed a job in Oman as a GP. And I have also cleared my Department of Health Abu Dhabi licensing requirements. And the Gulf is all about visa. If you want, so starting any journey is right now, everyone assesses if the visa is easier to get or not. So that is the main problem around the Gulf region. So what I will be doing, because covering so many countries for MBBS professionals, my fellow colleagues, is a difficult task in itself. In 1 hour, you cannot do it. So what I will be doing, I will be giving you a brief of everything, just enough to make you able to decide for yourself. Okay, I hope that's an objective that we can attain together. In a few minutes to a half hour to 1 hour, we will be able to conclude for ourselves what country is the best for us, okay, and what are the requirements. How can I reach there? I think that's a fair deal.
So I will be sharing my screen. Yeah, in the message box, you can type your questions, or you can write it on your paper. In the end, you will be allowed to unmute yourself. So just give me. Okay, so am I a host, Dr. Dilip? Please make me host so I can share my presentation with them. Yeah, okay, now I'm host. Yeah. So here's my screen. Okay, so here's my screen, and this is the. I hope you can see my screen, right? Just give me 1 second. You can see my screen? Gulf countries license guidance. Yes? Can anyone comment, because I can't see Zoom now? Dr. Dilip, is my screen visible? I can't hear you. If my screen is visible, I can continue. Yes? I can't hear. Yes, so yeah, so please unmute, Dr. Dilip. When I ask something, please unmute, and because I can't be seeing Zoom for message replies, just let me know via audio. So Gulf countries, so many Gulf countries are there: Kuwait, Qatar, Bahrain, and UAE, Oman. So I have acquired a license of two countries only right now, but uh, it's not about having many licenses. It's having the one license that will get you a job. So every journey starts small. Mine was also very humble beginning. So there are many students of mine who know me from my MCPS teaching. There are many colleagues. There are many juniors. Um, Many of you already know me. So my journey was very humble, and I had to start from scratch every journey. So it's not about I cleared this Abu Dhabi exam and Oman exam many years ago. It's a matter of only months. In the January, in the February, I was working on these exams and I passed it. So it's very recent. That's why I'm very sure I can give you updated information, not some saved files, not some recorded video on YouTube that was uploaded 4 years ago, 2 years ago. It's very fresh. So that's what I am telling you here. So the process of getting to a license for any MBBS graduate is different for different countries that you already might know. For Dubai, the exam comes first, then you can do data flow. For Oman, again, the exam comes first. You need to go through the exam first, then you can go for data flow. What do doctors do usually? They do both things simultaneously. They take 1 to 2 months for their data flow, which is basically 35 to 40 days. You will get your data flow positive report. And meanwhile, they prepare for their exam just to save their time, because you anyway have to do both of these things to get to a license. Oman journey is little bit bigger, little bit more requirements. That's why you will see very less doctors in Oman. Because why it's bigger? Because it requires 4 years post house job experience to be able to work as a GP. And after you are done with the data flow, you cannot book your Viva without having a job offer. So even if you contact an agency will charge you a big amount just to book your Viva. There are very high failure rates of the Viva. Only after passing Viva, then you will land a license in Oman. Okay. There are jobs in Oman. Oman is right now in a better condition than all other Gulf countries. But these requirements, having 4 years post internship, having to pass Viva, that is difficult. So who will guide Viva? The
academies are charging like $500 for the Viva. So who will prepare? So that's why the Oman you will see only less amount number of doctors working there. And for Abu Dhabi, the data flow has to be done first. Then you will book your exam. Then you will get the license activated only after having a job offer. So Qatar, the exams comes first. So I'll be going towards the exam specifics now. I won't be wasting much of your time. So DHA has written this guidance for how to approach the exams. So they say that the common these are the common topics you are seeing on the slides, and there will be 150 questions. You have to attempt in 3 hours. Okay, and these are the reference books that you should read it from. This is about only Dubai. Abu Dhabi does not have any exam hours requirement, any questions. Sometimes they give 150 questions, sometimes they give 120 questions. Roughly, you will get 120 questions. There are no question distribution. There are no topics described by Abu Dhabi. So that's why the traditionally the hard exam is the Abu Dhabi exam. It's said to be difficult most in all of these MOH, DHA, and hard itself. So hard is said to be more difficult than all of these of UAE. Okay, because there are no guidelines, there are no question breakdown. So let's move to another country. So this is Oman's blueprint. You know how many doctors actually have these blueprints in their hand? None. Majority don't have, and they are worried and they are surprised that why do they fail? Because you are not doing enough research, my boy. The Oman has this question distribution. If you ask anyone in the Oman, they won't have this question distribution, and it's directly from Ministry of Health document. So that's where an academy comes into play. That's where a tutor comes into play. This is the distribution of Oman. There are 150 questions that you have to do in around 3 hours. This is Qatar's question distribution. Again, 150 question, but the distribution is entirely different. 47 questions from medicine, 36 from OBGYN, pediatrics 37, and surgery 30. And passing score is of every exam, Oman, DHA, Abu Dhabi, or this Qatar, or even I'm not sure about Kuwait, because Kuwait is slightly different. So the passing score is 60% across the board. And these are the resources. And also there is a big document for Qatar medical exam for doctors. Now this is Saudi blueprint. And Saudi has a very big blueprint, probably bigger than any other Gulf country. They have a very detailed, even the topics are mentioned which you need to cover. So this is the rough distribution. So medicine is heavier on every licensing exam. Then comes gynae ops, somewhere pediatrics, matching the gynae number of questions, and then comes the surgery. And this is Qatar medical licensing exam requirements. There are two papers actually you need to go through for Qatar licensing. One is medicine, pediatric, surgery, ops, gynae. There's a 25, 25, 25, 25 questions from each of these. And there is paper two again. There's a true false. There are 40 clinical scenarios you are given. So Qatar is slightly different. And it's also said to be slightly difficult. So the difficulty level in each of the exam is different at different levels. For example, Abu Dhabi preparation is difficult. I call it difficult. Oman preparation is not difficult, but Oman Viva is difficult again. Qatar itself, theory exam is difficult. Kuwait. And Qatar exam is, I think I have heard from some, because Dr. Neil is here with us. He can also confirm that what is the level of the exam. Right now, for preparation purpose, I have trained doctors and taught them for Oman and Abu Dhabi. And those are the exams where I have the command. But obviously, because I have read so much for myself, so I can confidently prepare for all of other these exams, because I have the past material and other material available for all of across the board, across the all the Gulf. How do I prepare? Updated recalls, only dedicated curriculum, and we'll discuss the important topics that are left behind, that are not easily
graspable by our students. So I come on the Zoom and explain the topic, and then it's done. So what resources do I follow? I strictly follow the international resources, the textbooks, that's Master the Boards, the First Aid for USMLE Step 1 and Step 2. These are the resources I quote because I believe in the authenticity. So this is the prep system. These are, I'm showing you so because there is no enough time and there are not enough slides I can incorporate about each exam, because for each exam file I have roughly 250 plus pages of the past paper solved. These are solved by myself. That's why I can confidently say that these files are enough to do. So this is Oman file. This is the file for Abu Dhabi. These are called special files. Okay, and this, it's more than 700 pages long. Also other files are also there for this preparation. This is the file for again Abu Dhabi. So basically I have right now I'm working on Abu Dhabi and Oman only, and if anyone is interested for any other country, I can guide you about that as well. But keep in mind the jobs available in all the Gulf countries is minimal for GPs. Even Saudi Arabia, they are not hiring GPs. They are just circulating. They are just hiring their own workforce. That the GPs that are already working, or the GPs from India. There are many agencies working in direct employment from India. So for from Pakistan, if you want to go to any country, if you ask my advice, you should target Oman. It has better prospects than others. Saturation is everywhere. No one can guarantee you about the job, but that's what I would suggest you, because I have myself had a big command over the Viva and the theory component of the Oman. That's why I can tell you that you can go for it. So how do you decide? So in the end, it boils down to, if I should join any academy, doctor, why should not I do my prep myself? I have all the books available. I have few free Telegram recalls available. Why should not I do the prep on my own? So there are few pointers. Just it's from my personal experience of teaching students. So why and when should you think of joining any academy, and when should you not? So if you have more than 1 year of study gap after your house job, you haven't studied for any exam, you should join an academy, because you don't know what you don't know. If you haven't attempted any exam after your house job, any FCPS Part 1 or any other Gulf exam, you should join an academy. If you feel you don't have the stamina to sit for long hours or even don't have the time, then you should join an academy. If you feel all the free material that you have scrolled and scanned and read and you don't feel like they are authentic and they feel like useless crumb, so then again you should join this any academy that you want. Basically, you don't have any study partner, you are habitual of having study partner for study, you should join the academy. Want to give it first and final shot, because there is not only financial loss, but there is an emotional loss involved when you fail any paper. Failure is taken by any humans very emotionally. They feel they might even want to leave the journey. That's what is the cost involved if you fail. I'm not scaring you. There is no it's not my purpose to scare you, just to give you and my experienced overview, that many students feel like they can't continue, because I have been teaching Oman Viva students. A candidate of mine has failed 2 times for the Viva, and maximum you can attempt for Viva is 3 times. Okay, because that's a complicated technical thing that I'll tell you when you are only interested in Oman. So she told me, doctor, I want to pass it this time. So I told her that you should join my Viva course. I'll guarantee, and don't book an exam unless you feel prepared, unless you feel you can crack the exam. That's what the attitude should be. Don't give it a shot unless you feel fully prepared, because these are time loss, financial loss, and emotional loss that is involved with failure. So, and if you should join an academy, because if the recalls would have made you enough good to join any Gulf country,
every doctor would have been a very good doctor. They are not. You can clearly see the gaps in their practice. So what happens when you join any academy? You are habitual of investing in your education. So what happens? You go through the good books from the day one. You go through the textbooks from the day one. You have a mentor that you are accountable to, that you are answerable to. That's what happens with any academy. That's what will happen with me as well. So if you are with me, preparing with me, my students know that I don't stop bothering you. I keep bothering you all the time. And I keep asking you how much you have advanced yourself, how many questions you have solved. That's what an accountability feels like. So that what is the long term effect of this preparation? In any viva, in any interview, you can easily pass, because I just don't give recalls to my students. I give them textbooks in PDF. So how do you manage any case of headache? How do you manage any case of chest pain, abdominal pain? Viva, they'll ask you just this: how do you manage a pediatric diabetic ketoacidosis? Do you know? You don't know. So someone has to tell you how to approach these cases. So that's a long tail of this joining any academy or any mentor. I won't be taking much of your time. I'll just finish off my presentation with the great quote of Dr. Muhammad Iqbal, that is, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Make yourself proud, make yourself well educated, well equipped. This knowledge, this information is the tool of every doctor. The exams are the tools of every doctor, that every doctor must have in their arsenal. So here I would summarize my presentation, and now I will give a few minutes to my colleague. If yeah, Dr. Neil. Dr. Neil, can you unmute yourself? It's your time. So ask to unmute. Yes. If you want to share any presentation, that's also fine. Dr. Neil is my very dear colleague. He has recently joined Qatar as a resident. So joining at the residency level, it's the biggest milestone that any doctor can assume for themselves or suppose for themselves, is landing a residency job. And it's not that much easier for Dr. Neil. He did a residency from Pakistan, then landed residency at a very, very big hospital in Qatar. So, first of all, I congratulate him, and I'll give the mic to Dr. Neils for sharing us few insights how the Qatar licensing and residency pathway looks like in an overview, and he'll just take few minutes of your time. Okay, thank you, Dr. Suresh, giving me opportunity on this. A lot of students asking me how to come Qatar, Dubai, and Saudi Arabia. A lot of message I receive. So it is, I think, a good platform to deliver a message how to come Dubai, Saudi, and Qatar. So currently, I am working in Sidra Hospital in Qatar, Pediatric Emergency Clinical Fellowship residency I have complete. So I will share you how to come Qatar. If you want Dubai and Saudi, so I will also guide. First I give Dubai exam, but unfortunately not get job. But as Suresh already mentioned, there is a visa issue, and I also pass Saudi medical license exam, and as Suresh also mentioned, there is a GP problem, not jobs. So in Gulf is totally oversaturated. Even USA, UK, Ireland, you cannot get job. So this is, I think, Oman and Bahrain, and this is the best option, in my point of view. So today I will share that in Qatar there are only three pathway you can come: GP, consultant, fellowship, specialist. There is a no registrar, no senior registrar, no medical officer level. And in Qatar, you can give exam before data flow. Even you can give data flow before exam. Dubai,
Saudi Arabia and Qatar have same. You can give exam or data flow vice versa as your wish. And Qatar, the pattern is already shared 25% surgery, 25% medicine, 25% pediatric, and 25% gynae ops. The passing score also 60%. The exam is the very easier to all other Gulf country. It is a very basic level, and even you can pass with 1 week study. And as, as everywhere recall is uh, it more than 50% come from recall. As also already mentioned, Dr. Suresh, the recall file here I have. So I think this is more than enough for you. No need to study from USMLE book and this. So for GP, you have 1 year internship, and after 1 year internship, 5 year experience is a must. If you have no 5 year experience, you cannot get QCHP license. Qatar Healthcare Professional License. So 5 year lesson, which license? 3 in 5 year, 3 year is the GP, MO experience, and 2 year your specialty, pediatric endocrine. If you have pure pediatric, pure endocrine, pure internal medicine, you cannot get license. Must be 3 year GPR MO and 2 year other license. So first you get pass exam, second data flow, and third go for registration for evaluation, in which you have to put exam, data flow, and your good studying certificate. Go for DHP portal. DHP portal is the Department of Healthcare Professional portal, in which you three things put: data flow, Qatar exam, and good study. They will provide you 6 month license, and through these 6 month license, you have to come Qatar must on visit visa, because on from Pakistan it is a very rare chance. Minimum 5% you can get from job from Pakistan. So you must have to go visa and come. Other pathway is a specialist pathway. There is no need to give any exams. It is exempted from just data flow, good standing, and do your registration. You can come. FCPS and MD is recognized. If you have MRCP, DCH, and MS surgery, these are not recognized. FCPS and MD is recognized from Pakistan. If you apply on the base of MRCPCA, they say provide the UK training, so they will not give you license. And so I come here, I pass a GP exam, I found job here. There is a too difficult, because Qatar is the smallest country and there are limited jobs here, but you can find even rural area like Al Wakra and other area, there are a lot of jobs, but my priority is Doha, but in Doha is oversaturated. So then I apply for fellowship. The fellowship you have to give three, if fellowship and residency is the same. There are three requirements: MCCQE Canada, you can get residency. If you have USMLE CK, step 2 CK only, not 1 and 3, you can get residency and fellowship. If you have IFOM CS, IFOM CS is exam of only Sidra Hospital, International Foundation of Medicine. It is the equivalent to USMLE step 2. There are 92 scores, at 72 you can pass. Total score 92 and 72 is a pass scores. And also for residency is a challenging here, because they prefer Egypt, Gulf country student. Currently, I am doing a fellowship. I not seen even Indian people, not any Pakistani. All are Egypt, Saudi, and other countries. So you not think about residency, because residency is a less than 0.1% chances. Yes, if you have a degree, MRCP or 4 year training or 2 year training, you can get fellowship. A fellowship depend it 1 year, 3 year, 2 year. So also again you have to pass any exam, MCCQE or IFOM or USM step 2, any of one of three. And OET is also must. So fellowship and residency is very difficult. I advise you, all of you, go for GP exam if you have 5 year exam, 5 year experience. Thank you. If you have any questions, so you may ask regarding Saudi, Dubai, Qatar, and even other. Okay, thank you so much, Dr. Neil. Thank you so much, and once again, congratulations to you Welcome. for joining. मैंने भी आपकी post देखी थी Facebook पे, and it's a good to see you at a good platform. Thank you, Dr. Suresh. And there is a one question for the GP. Let me clear one thing more कि जैसे कि डॉक्टर नील ने भी बताया कि गल्फ कंट्री में जो सैचुरेशन के जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं,
तो ज्यादातर कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, दुबई और अबू धाबी, यहाँ पर डेटा फ्लो पहले करवाना होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, किसी ने मेरे ख्याल से डॉक्टर सुनील ने सवाल पूछा है, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डेटा फ्लो आप भले बाद में कराएं। लेट मी क्लियर, डेटा फ्लो इज मैंडेटरी बट ऑप्शनल, कि आप पहले भी करवा सकते हो और बाद में भी करवा सकते हो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके। सो यस, सो लेट मी क्लियर कि कुछ कंट्रीज और स्टेट ऐसी होती हैं, जैसे दुबई है, और आपका दुबई, कतर, बहरीन, यहाँ पर ये होता है कि आप एग्जाम पहले दे दें भले, और डेटा फ्लो बाद में करवा लें। दैट इज ऑप्शनल, मैंडेटरी है लेकिन ऑप्शनल है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, जैसे सऊदी है, अबू धाबी है, ये कहते हैं कि नहीं, ये कहते हैं कि पहले डेटा फ्लो, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन आप पहले करवाएं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्स की जो है वो बुकिंग देंगे, डेट देंगे। और हर और रिक्वायरमेंट भी सबकी अलग है। जैसे सऊदी में 1 ईयर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कतर में डॉक्टर नील ने बताया कि 5 इयर्स है, ओमान में 4 इयर्स है, आफ्टर हाउस जॉब, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्नशिप। दुबई में 2 साल है एज ए जीपी। लेकिन अगर इन्हीं कंट्रीज में अगर आप डिफरेंट रैंक पे जा रहे हो, जैसे आपने एफसीपीएस किया हुआ है और आपके पास 3 साल का पोस्ट एफसीपीएस 3 इयर्स ट्रेनिंग है, तो आपकी रैंक एज ए जीपी नहीं होगी, आपकी रैंक एज ए स्पेशलिस्ट होगी। और अगर आपकी एफसीपीएस के बाद 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आपकी रैंक एज ए कंसल्टेंट होगी। यही फॉर्मूला सऊदी में भी एप्लीकेबल है। तो रैंकिंग के हिसाब से भी सैलरी बढ़ती जाती है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो सिर्फ जीपी पे ही जाओगे। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस मस्ट है, मेक श्योर एफसीपीएस के बाद 3 साल आप जाओगे एज ए स्पेशलिस्ट इन सऊदी, इन गल्फ, दुबई। और एफसीपीएस के बाद 5 साल के बाद आप एज ए कंसल्टेंट जाते हो, फिर आपका जो भी डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपकी पहली चीज है, मैं डॉक्टर सुरेश को पहले हैंड ओवर करूंगा। डॉक्टर सुरेश अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे, उसके बाद में आपको ये जो डेटा फ्लो के जितने भी क्यूरीज हैं, एलिजिबिलिटी लेटर क्या है, एवोल्यूशन क्या है, अथॉरिटी लेटर क्या है, उसके बारे में मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। लेकिन लेट्स कमिंग बैक टू द डॉक्टर सुरेश। डॉक्टर सुरेश, ओवर टू यू। Okay, yeah, thank you. Yeah, so what was the question? So have you given me so about ending remarks? I could not get it. Do I have to? No, no, I mean to say कि it's over to you now. We would like to hear some closing remarks regarding this webinar, and then I will answer all the data flow questions at all. Okay, yeah. So if someone wants to get into the academic preparation, so I would suggest make up your mind as soon as you can because the saturation is increasing day by day. So what do you think is happening? अगर आपको लगता है कि अबू धाबी में या दुबई में जो लोग विजिट वीजा पे गए हैं वो कितने हैं? 100 से ज्यादा तो मैं जानता हूँ जिनको जॉब नहीं मिली। वो क्या करेंगे? वो ओमान जाएंगे, सऊदीया जाएंगे। डॉक्टर्स इतने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। और वो ऑलरेडी कहीं काफी जगहों पे सेट हो चुके हैं और वो फिर क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास एक्सपीरियंस है, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि भाई कहीं से हमें ओमान में कोई जॉब मिल जाए। इवन एजेंसीज जो हैं ओमान में 1 महीने की सैलरी लेके आपको जॉब देती हैं और ऐसी जॉब्स हर वक्त अवेलेबल रहती हैं। 1 महीने की सैलरी समझ रहे हैं, 8 लाख। जिनके पास है वो तो चले जाएंगे, वो तो इजीली लैंड हो जाएंगे। सो अगेन आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी पैनिक हेयर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वार्निंग। सो ये नहीं कहिएगा कि आगे आने वाला 1 साल में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एज सून एज यू कैन you should work it, decide on it, join any academy, don't join any academy, your personal decision, but you should start it and end it as soon as possible and land a job somewhere if you want to secure your future, because ultimate future is in the first world countries, and to reach the first world countries the only way is through Gulf, because in Pakistan you cannot afford the USMLEs and AMC expenses. That's what I can say. So that's where I will end my presentation. If you have any queries, Dr. Dileep's team is very good in response time. They'll respond to you instantaneously. And if you want to join or start any service, please do so. And if you want to negotiate on any discounts, I will again request Dr. Dileep to give them maximum available discount. And he will now share you what are the price packages and how we are helpful better than any academy on the planet, I can say, because our charges are least compared to all other academies, including data flow, including academy preparation. I have personally negotiated with Dr. Dileep to keep only minimal charges
the charges that are sufficient, and they are also not feeling burdensome on the end user, that are you as a doctor, because we know you are working in Pakistan and you cannot afford this expensive academies. So that's what we are offering here, and you will get a best price deal here. And we can't be sure that in after 1 month what will happen, because in 1 month, if our expenses are more, if we are paying our admin team more salaries, so obviously the price will increase. So right now we are offering you the best prices possible. I think everyone should join it. And if you have any queries, concerns, all the time, Dr. Dileep's team is available. It's an excellent team. Dr. Dileep himself is an excellent doctor, physiotherapist, so a very good friend of mine, a very good senior of mine. So I hope things will get better. Okay, thank you so much. Thank you so much, Dr. Suresh, for this wonderful and informative session. Thank you, Dr. Neil, for joining. अब मुख्तसर टाइम को हम थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे because everyone has some other commitments to do after the 9 p.m. Okay जी, कुछ क्यूरीज थे जिनका मैं आपको बता दूं. अगर आपकी क्यूरी ये है कि which country और which paper is easy या which country is better, मैं आपको लिख के देता हूँ. 10% चांसेस हैं कि अगर आपको लाइसेंस मिल जाए और आप पाकिस्तान में बैठकर जॉब के लिए अप्लाई करें और आपको जॉब मिल जाए. देर आर ओनली 5 to, डॉक्टर नील ने बिल्कुल ठीक कहा, देर आर वेरी लेस चांसेस. लेट मी क्लियर, मैंने DHA 24 में दिया था, 25 में मैंने DOH क्लियर किया था. आफ्टर दैट आई विजिटेड UAE एज वेल. But there are very few chances if I'm getting from Pakistan. There are major chances if you go on visit visa, different visa, it's up to you. द फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड. तो अगर किसी का क्वेश्चन था कि कौन सा पेपर इजी है, तो भाई इजी या मुश्किल कुछ नहीं होता. एक इंटरनेशनल पेपर देने जा रहे हो आप लोग, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर. हर किसी का जो स्टेटस होता है वो डिफरेंट होता है. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर कौन सा, हाँ रैंकिंग में कर सकता हूँ. जिस तरह USA और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम है, दीज आर द टफेस्ट एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट अबू धाबी इज द टफेस्ट. थर्ड नंबर पे ओमान और इनके एग्जाम है. चौथे नंबर पे सऊदी और पांचवें नंबर पे इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग हायरार्की में बताऊं तो दुबई, बहरीन वगैरह. लेकिन सब में आपको एक प्रिपरेशन, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है. DHA भले इजी एग्जाम है, आपको 50% इजी इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें सवाल इजी होते हैं. इजी इसीलिए क्योंकि उसका जो पासिंग रेशियो है वो कम है. लेकिन उसी के कंपेयर में आप अबू धाबी जहां पर क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं, तो बहरहाल मैं उसके डिटेल्स एग्जाम में तो नहीं जा रहा कि मुश्किल इस सेंस में क्योंकि उनका पासिंग रेशियो ज्यादा होता है. तो ये हमारी एकेडमी का मकसद सिर्फ इतना था कि हम आप लोगों को फैसिलिटेट करें. और दूसरा, जिस तरह डॉक्टर सुरेश ने बताया, अगर हम मिनिमल चार्जेस की भी बात करें, उसका भी क्रेडिट मैं जरूर लूंगा. बिकॉज माई एकेडमी इज ओनली चार्जिंग वेरी. हमारे पास इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी हैं राइट नाउ. हमारे पास एक नाइजीरिया से ज्वाइन किया हुआ है, मेरे पास इंडियन कैंडिडेट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के, बांग्लादेश से ज्वाइन करते हैं, और बिल्कुल उनके कंट्रीज के मुकाबले में हम बहुत ही कम चार्जेस जो है ले रहे हैं. तो लेट मी क्लियर, मैं उसके मुख्तसर आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये आंसर करता हुआ चलूं. तो पहले तो किसी ने ये पूछा था कि पेपर कौन सा इजी है. तो पेपर कोई भी इजी मुश्किल नहीं होता, बट उनका पाथवे हम उसको पाथवे इतना इजी कर देते हैं. पढ़ना आपने, अटेम्प्ट आपने करना है भाई, जाहिर सी बात है. पाथवे हम आपको ब्रेक डाउन करके बता देते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको 10,000 MCQs दे दूं और आपसे मैं पैसे भी चार्ज करूं 10-15 हजार, और मैं आपको बोलूं जाओ इसको पढ़ो, अब उस 10-15 हजार MCQs में से वो 150 MCQs कहाँ से आएंगे? उन टॉपिक्स को समराइज करना, जो हम पैसे चार्ज करते हैं ना, वो इस मेहनत के हैं. अगर मैं आपको 10,000 MCQs दे दूं, 4 बुक्स दे दूं, मैं आपको बता देता हूँ MBBS के कौन कौन से बुक्स आते हैं. सर्जरी आती है, मेडिसिन आती है, गायनी ऑप्स आती है, मैंने आपको बता दिया. बट उनको समराइज करके डॉक्टर सुरेश ने, इन लोगों ने मिलके, फैकल्टी ने मिलके उसको समराइज किया हुआ कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और पास पेपर में कहाँ कहाँ से. इस चीज के हम जो है वो पैसे चार्ज करते हैं. पहला जवाब आपका. दूसरा, कौन सा कंट्री अच्छा रहेगा? आप उस कंट्री चूज करें जहां पर आपकी कोई दुआ सलाम हो. लेट मी क्लियर, अगर आप एग्जाम देके पाकिस्तान में बैठे हुए हो, ओमान का, कतर का, किसी भी मिडिल ईस्ट का, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जॉब जो है वो आपको सर्च करेगी, दैट इज योर क्लियर कट मिसअंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू गो. अब आप जब वहां पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है कोई दोस्त यार होगा जो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर रिहाइश सस्ती है, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, आप किस वीजा पे जाते हो विजिट पे, यहाँ पर आपको खाना पीना सस्ता मिलेगा. ये चीजें बताने के लिए बंदा होना लाजिम है. लोग क्यों दुबई की तरफ जाते हैं? जिस तरह डॉक्टर सुरेश ने बताया था कि भाई मैं 100 लोग जानता हूँ जिनको जॉब नहीं मिली, उन 100 में से 90 लोग गए भी नहीं होंगे. लेट मी क्लियर, लेट ये मेरी तरफ से क्लियर कट हिंट है. रीजन, वो जॉब हंट का भी एक तरीका होता है कि अगर आप जहां पर जा रहे हो, किस वीजा पे जाते हो. लोग यहाँ से बैठ कर सर्च करते हैं, जॉब नहीं मिलती, और वो दिल शिकस्ता हो जाते हैं और छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं होता है. आप वहां पर जाएं, हर बंदा जाता है. जब आप जाते हो तो आपके चांसेस जो है ज्यादा. आप हॉस्पिटल घूमते हो,
विजिट करते हो तो आपका एक एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी यही सजेशन है कि अगर आपका माइंडसेट ये है कि पेपर देके पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से जॉब अप्लाई करना है, तो लिख के देता हूँ मेरी हमारी एकेडमी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चांसेस बहुत 5% है। कल को आप हम पे ब्लेम दो कि भाई हमने एकेडमी ज्वाइन की, पेपर भी दिया, हमारी जॉब नहीं लगी, तो वी आर नॉट डीलिंग विद द जॉब। तो पहली इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप जाने के माइंड में हो, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। नंबर टू, जो दूसरा क्वेश्चन था कि पहले पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न मैंने आपको दोनों बता दिए। पहले आप कंट्री चूज करेंगे। अगर आप एक सीरियस जो है वो एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका पहले चूज करना होगा विच कंट्री यू आर टॉकिंग अबाउट। जैसे कुछ कंट्रीज की तैयारी हम कराते हैं, कुछ कंट्री की तैयारी हम नहीं कराते। तो अगर पहले आपने कंट्री बताना है, जैसे डीएचए दुबई का है, डीओएच अबू धाबी का है, ओमान का डॉक्टर सुरेश ने बताया, कतर का डॉक्टर नील ने बताया, तो पहले आपने कंट्री चूज करना है। फिर कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नहीं भाई, डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाओ, पेपर बाद में होगा। तो हम ये डेटा फ्लो से लेके लाइसेंस तक डील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पेपर की तैयारी आपको कराएंगे, पेपर की तैयारी के लिए तो फैकल्टी है हमारे पास, लेकिन बाकी अब किसी ने सवाल पूछा कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो लेट मी क्लियर। आपको 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी गल्फ कंट्री का पेपर क्लियर करने के लिए। सबसे पहला आपका जो लाइसेंस होता है पीएमडीसी का, उसका लाइसेंस और एक्टिव गुड स्टैंडिंग हमें चाहिए होता है। जो आपका पीएमसी का मेडिकल रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस है वो, और प्लस में आपका गुड स्टैंडिंग, 2 डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी ऑब्वियसली डिग्री, जिस डिग्री पे आप अप्लाई करना चाहते हो, और डिग्री की जो है ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो भी हमें चाहिए होती है। नंबर 3, उसके बाद जब भी आप डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करते हो, तो हर कंट्री के हिसाब से एक्सपीरियंस लेटर है। दुबई है तो हमें 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ओमान के लिए 4 साल का चाहिए हाउस जॉब के बाद, कतर के लिए डिफरेंट चाहिए, सऊदी के लिए 1 साल चाहिए। तो जिस रैंक के लिए आप अप्लाई करते हो, जैसे सऊदी या दुबई में जो जिस रैंक के लिए अप्लाई करते हो, उतना एक्सपीरियंस लेटर हमें आपने वेरीफाइड करके देना होता है, फिर हम उसको डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, पीएमडीसी के बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपके हमारे पास जो है मेन मेन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 3 स्टेप, पेपर की तैयारी। पेपर की तैयारी आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, ड्राइव के थ्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस के 4 सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट के जितने भी लेक्चर्स होंगे जो डॉक्टर सुरेश कंडक्ट करेंगे, उसके हर लेक्चर के बाद हम लाइव आएंगे। मेक श्योर हर लेक्चर आपका लाइव नहीं होगा, कुछ लेक्चर लाइव होंगे, कुछ लेक्चर आपको ड्राइव के थ्रू मिलेंगे। और उसमें सिर्फ हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे, भाई जाओ ये पढ़ो, वो तो आपको मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आप बुक्स ले लें, आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको रैपिड एक्सेस की बुक्स मिल जाएगी, जनरल प्रैक्टिशनर की मेरे पीछे लाइब्रेरी में भी पड़ी हुई है, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो लेक्चर्स आपके होंगे वो ड्राइव के थ्रू लेक्चर्स होंगे, और उसको आप किसी भी अपनी जॉब फीजिबिलिटी के हिसाब से सुबह शाम रात सुन सकते हो। फिर जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, उसके बाद कहते हो कि मेरा तो इसमें से कंसर्न क्वेश्चन है, फिर हम एक आपका टाइम मीटअप करवाएंगे डॉक्टर सुरेश के साथ, फिर जूम के थ्रू क्लास होगी, भाई चले आप अपनी क्वेश्चंस पूछें। तो मकसद सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करना नहीं है, मकसद है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, टॉपिक पढ़ाना। तो आपकी चाहे आपकी ग्रेजुएशन को 10 साल हो, 5 साल हो, आप फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट तो एलिजिबल नहीं है, मिनिमम 2 साल रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, तो हमें 1 से 2 माह की अकेडमी होती है ये। एनी टाइम यू विश टू ज्वाइन, वी विल स्टार्ट इन अगस्त। अगस्त से हम इस बैच का स्टार्ट करें। तो नंबर 3 स्टेप क्या था? नंबर 3 स्टेप था टेस्ट की प्रिपरेशन। नंबर 4, व्हेन द डेटा फ्लो इज डन, डेटा फ्लो इज पॉजिटिव। डेटा फ्लो में भी मैं बता दूं कि काफी कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो पैसे लेके और आपका डेटा फ्लो साइड पे करते थे। अब वो डेटा फ्लो केस इंसफिशियंसी में जाए, आप ब्लैकलिस्ट जाओ, उनसे हमारा जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम आपका डेटा फ्लो के चार्जेस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम चार्जेस लेंगे, डेटा फ्लो के जितने भी चार्जेस होंगे वो आपने पे करने हैं। जैसे जीपी पे अलग चार्जेस होते हैं, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। आपके एफसीपीएस पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है। डेटा फ्लो की जो कंसल्टेंसी है वो वो आप हमें पीकेआर में पे करेंगे, जो मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। तो मकसद हमारा होगा चौथा स्टेप, जब आपका डेटा फ्लो पॉजिटिव आ जाता है और आप बुकिंग अपॉइंटमेंट कराते हो, तो अपॉइंटमेंट के 2 तरीके हैं। जो गल्फ कंट्री की अपॉइंटमेंट है वो प्रोमेट्रिक सेंटर है, हर सूबे में एक होता है, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, और यहाँ पर मौजूद है। जो अबू धाबी और सऊदी के एग्जाम्स होते हैं वो JNS, जिसको पीयर्सन व्यू कहा जाता है, उनकी, जिसमें अबू धाबी का एग्जाम भी होता है, वो भी कराची में मौजूद है। तो मुख्तसर ये है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा, जिस तरह वो कैबिन बने होते हैं कंप्यूटर के, ऑनलाइन होते हैं, और हर क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है। जिस तरह एक सिंपल सा डीएचए का हमने शेयर किया था कि 3 घंटे आपको मिलते हैं, सऊदी अबू धाबी में आपको 2.25 3 घंटे मिलते हैं, वो पैटर्न हम आपको बाद में गाइड करेंगे। 150 क्वेश्चन मिलते हैं, पासिंग रेशियो सबका मुख्तलिफ है, सऊदी ओमान का 60 है, दुबई का, अबू धाबी का, सऊदी का 55% है, वो सबका मुख्तलिफ होता है, वो विद द पेज। तो ये आपका चौथा स्टेप है, आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग। अब उसके चार्जेस, अपॉइंटमेंट बुकिंग के जो चार्जेस होते हैं वो वेरिएबल है। एमबीबीएस वालों के $280 होते हैं, जो आपने डॉलर्स में वो हम पे करेंगे, आप हमें पीकेआर में कन्वर्ट करके देंगे। और बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के $240 होते हैं वगैरह। ये हुआ चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप होता है डिफरेंट नाम है उसके, जैसे दुबई में वर्ड यूज होता है एलिजिबिलिटी लेटर, ये सऊदी में यूज होता है अथॉरिटी लेटर, अबू धाबी में नॉमिनेशन लेटर,
डिफरेंट लेटर नाम होता है, या इवोल्यूशन लेटर शारजा में वर्ड यूज होता है। ये जितने भी लेटर्स हैं ये क्या है बेसिकली, ये लेटर एक ट्रांसक्रिप्ट है, एक रिकॉर्ड है आपका कि भाई इस बच्चे ने पेपर पास किया है और इसका डेटा फ्लो भी पॉजिटिव है। याद रखिएगा, कोई भी कंसल्टेंट आपको ये कमिटमेंट करे कि भाई हम आपको एलिजिबिलिटी लेटर दिला देंगे और बगैर पेपर वगैरह के, तो वो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ये रॉन्ग होगा। जो प्रॉपर तरीका वो ये है कि डेटा फ्लो पॉजिटिव करवाएं और पेपर पास करें तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। एलिजिबिलिटी लेटर क्या है? ये वो लेटर है जो डिफरेंट कंट्री में जब आप जॉब के लिए हंट करते हो, जैसे पाकिस्तान में आपका पीएमडीसी लाइसेंस है जो आपको अलो करता है कि आप पाकिस्तान में एज अ प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी तरह हर कंट्री का अपना लेटर होता है और यही लेटर वो है जॉब मिलने के बाद लाइसेंस में कन्वर्ट होता है। जैसे डॉक्टर सुरेश ने एक वर्ड यूज किया कि उन्होंने लिखा कि लाइसेंस्ड जो है वो जीपी, लाइसेंस जीपी और रजिस्टर्ड जीपी में बड़ा फर्क होता है। रजिस्टर्ड जीपी जब आपको ओमान, फॉर एग्जांपल आपने दुबई का पेपर दिया लेकिन आपको दुबई में जॉब नहीं, अभी तक आपको जॉब नहीं मिली, तो आप रजिस्टर्ड जीपी हैं दुबई के डीएचए के, लेकिन जब आपको जॉब मिलती है यही लेटर आपका लाइसेंस में कन्वर्ट होगा, देन यू विल बी एबल टू टाइटल एज अ लाइसेंस। ये मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है? तो लेटर तक आपका हमारे साथ कॉन्टेक्ट रहता है और ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दी, इन पांचों स्टेप्स तक हम आपके साथ होंगे। जब लेटर मिल गया, अब आप उसको जॉब कैसे अप्लाई करते हो, पाकिस्तान से जाकर अप्लाई करते हो, पाकिस्तान में बैठकर अप्लाई करते हो, इट्स ऑल योर हेडेक, इट्स ऑल योर एफर्ट। उसमें हम इतना हेल्प कर सकते हैं कि अगर हमारे हाथ में कोई जॉब हुई या कोई नजर में हुई तो हम आपको गाइड करेंगे। सो द ओनली रीजन फॉर दिस वेबिनार इज टू फैसिलिटेट द जनरल प्रैक्टिशनर if they are seeking to pursue their what we can say future in गल्फ एग्जाम, तो एग्जाम को क्लियर करना और उसके लिए लेटर तक जो हेल्प आउट करना वो हमारी एकेडमी का सोलो पर्पज है। अब इन दोनों के मैं आपको मुख्तसर चार्जेस बताते, तो अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो भी आपको लेटर पता चल जाएगा। जितने भी एग्जाम्स के चार्जेस हैं वो सारे मिलाकर वो आपने अपने कार्ड से पे करने, कार्ड की पेमेंट, ये वो हमारी कंसल्टेंसी डेटा फ्लो की और हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के जो हम टोटल चार्ज करते हैं वो 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज चार्ज करते हैं, जिसमें आपको तैयारी करवाना, पढ़ाना, मतलब ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जितने भी लेक्चर हो वो आपका हेडेक नहीं, वो हमारा हेडेक है। आपके 15 लेक्चर हो, 2 माह की तैयारी, 3 माह की तैयारी, 1 माह की तैयारी, 1 हफ्ते की तैयारी, वो शेड्यूल बनाना हमारा काम है। और दूसरा, जब तक आपके हाथ में लेटर नहीं ना आ जाता, डेटा फ्लो से लेके जब तक आपके हाथ में लेटर नहीं ना आ जाता, आई विल बी इन टच विथ यू। तो फॉर दीज 2 एफर्ट्स, अब बाकी चार्जेस क्या है? जैसे $240 है, वो भी आपने पे करने अपने अकाउंट से, ठीक है? जैसे आपने कोई डेटा फ्लो करवाया, वो डिपेंड करता है, ओमान के लिए करवाया तो ओमान रियाल है, कतर है तो कतरी रियाल है, दुबई है तो दरम है, वो पेमेंट भी आपकी होगी। अगर मैं इसको लमसम करूं, मुख्तसर करूं, तो जो टोटल कॉस्ट है वो पाकिस्तानी अंदर 3 लाख में आ जाती है, जो ये सारे स्टेप्स हैं, जिसमें से 2 लाख हमें डिफरेंट करेंसीज में देने होते हैं और 1 लाख जो है वो हम चार्ज करते हैं। अगर इसको आप अपने कार्ड से भी पेमेंट करना चाहो तो हमें कोई इशू नहीं है। हमें आपने अपनी जो कंसल्टेंसी मैंने आपको बताई और जो टीचिंग चार्जेस बताए वो आपने पे करना है, रेस्ट ऑफ वुड बी ऑल योर्स। सो डू लेट मी नो कि अगर इसके अलावा कोई क्यूरी है तो ठीक है, वरना हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी। इस मीटिंग का लिंक भी आपको मिलेगा, नॉट, डोंट वरी विद दैट। ओके जी, कोई क्यूरी नहीं है डेटा फ्लो से रिलेटेड, वेबिनार से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो मेरी तरफ से मीटिंग डन है। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर नील, थैंक यू डॉक्टर सुरेश। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस मीटिंग को एंड करूंगा और इस मीटिंग को मैं थोड़ा सा एडिट करके आप लोगों को बाद में प्रोवाइड भी कर दूंगा। फर्दर मोर, किसी ने भी व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं छोड़ना, आप लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप में रहना है। हमारी जो भी अनाउंसमेंट होगी वो ग्रुप के, और लेट मी क्लियर, ये वेबिनार सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए था, रेस्ट ऑफ जो सर्विसेज था वो हमारी सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। आई विश देयर इज नो मोर क्वेश्चन एंड देयर इज ओनली 1 minute लेफ्ट। थैंक यू डॉक्टर सुरेश फॉर ज्वाइनिंग, डॉक्टर नील स्पेशली फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग।